यस सर, यस सर। समझ गए ना? ओके, अब यस। ध्यान से देखना बेटा। ये ट्राइंगल है ब्रेवो अल्फा डेल्टा, ब्रेवो अल्फा डेल्टा, राइट। इस ट्राइंगल में ये थीटा एंगल है और ये 90 डिग्री एंगल है। मुझे बताओ इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस साइड कौन सी है बेटा? सर हाइपोटेन्यूज सर, सर ओ भी होगा ना सर? सर ओ बी और डी बी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द हाइपोटेनस, राइट बेटा। यस सर। अब इसमें बताओ कि अगर ये एंगल 7.2 को हम कंसिडर करें तो बेस कौन सा होगा? सर बेस जो एंगल जो 90 डिग्री बन रहा है सर, वहाँ पे होना सर बेस। अ, बेटा बताओ, ब्रेवो अल्फा बेस है या अल्फा डेल्टा बेस है? अल्फा सर डेल्टा सर। अल्फा डेल्टा बेस है या ब्रेवो अल्फा बेस है? अल्फा डेल्टा सर, अल्फा डेल्टा। बेटा तुम्हें बेस निकालने में इसके डाउट आ साथ रहा है। एंगल बनाता है सर। राइट बेटा, राइट अंकित, लेट हिम आंसर। तुम्हें बेस निकालने में दिक्कत आ रही है बेटा? हाँ सर, वही सर मुझे डाउट हो रहा था। हाँ, तो डाउट तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में है, यहाँ नहीं है। जब भी बेटा हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड हमेशा होती है हाइपोटेनस। ये तो ओके सर। क्लियर है। यस सर। जो एंगल तुम कंसिडर कर रहे हो, इस एंगल के साथ टच होती हुई जो साइड है वो होती है बेस। हमने ओ 7.2 का एंगल कंसिडर किया, इसके साथ जो साइड टच हो रही है वो हमेशा होता है बेस। और जो साइड एंगल के साथ टच नहीं होती, विच इज ब्रेवो टू अल्फा, वो होता है परपेंडिकुलर। ओके सर। समझ गए बेटा? अब आप हाँ। cos थीटा की रेशो जब लगाओगे, cos ऑफ 7.2 विल बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा अपॉन ब्रेवो डेल्टा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ रहे हो बेटा या नहीं समझ में आया? हाँ ये सर समझ गए सर। तो सर यहाँ पे ओ, सर हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रेवो अल्फा, अल्फा डेल्टा अपॉन डेल्टा ब्रेवो। बिल्कुल बिल्कुल सही है ओके। बेटा। अल्फा डेल्टा जो है ये इंटरसेप्ट है, विच यू हैव कैलकुलेटेड एज 2.7, इसीलिए हमने यहाँ 2.7 लिखा है। यस सर। और जो ब्रेवो डेल्टा है, दैट इज द डिपार्चर बिटवीन द टू लॉन्जिट्यूड्स, dr longitude and observed longitude, this is the departure, इसीलिए हमने यहाँ पे डिपार्चर लिखा है। एक्चुअली सर वो मैंने वो सब प्लेन से नहीं पढ़ा था ना, कॉस कॉस थीटा इज इक्वल टू डिलेट अपॉन डिस्टेंस एंड साइन थीटा इज इक्वल टू डिपार्चर अपॉन डिस्टेंस, तो सर मुझसे कंफ्यूज हो रहा था। ओके, वो कॉस कोर्स होता है बेटा, यहाँ तो कोई कोर्स नहीं है। यहाँ पे कॉस कोर्स नहीं है, वो प्लेन सेलिंग में कोर्स वाले फॉर्मूले हैं। ये तो हमने सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व किया है। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व करने में दिक्कत आए तो आप बिल्कुल इसको भूल जाओ और आप इसे प्लॉट कर लो बेटा। जस्ट प्लॉट इट एंड यू मैयर दिस। ये डिपार्चर यहाँ से मैयर कर लो, आपको सीधा ही ये डिपार्चर मिल जाएगा बेटा। 2.7 डिपार्चर डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। ओके सर। ओके सर। ओके, ठीक है बेटा। पता था कि सर जो मैं ट्रेन सेटिंग में जो पढ़ा था ना, मैं उसके हिसाब से कंफ्यूज हो रहा था। अब सर क्लियर हो गया। ओके, वेरी गुड बेटा, क्लोजिंग इट नाउ। आई एम एक्सक्यूज मी सर। ओके, ऑल राइट, बोलो बेटा। सर रिगार्डिंग ये जो कल स्टार आइडेंटिफिकेशन हमने किया था, स्टार ऑब्जर्वेशन, सर स्टार इसमें जो सूटेबल है फॉर साइट। स्टार सुटेबल फॉर साइट, सर इसमें ना रेंज जो है उसमें थोड़ा डाउट आ रहा है, जो हम रेंज लेते हैं एसएच स्टार का। क्या डाउट आ क्योंकि रहा है बेटा? जैसे हमने एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि वो 1800 से 1900 वाला, तो राइट, ठीक है। इसका उसमें जब हम 1800 का निकालते हैं तो हमारा एसएच स्टार आ रहा है 151, ठीक है बेटा। और उसमें जब 1900 का निकालते हैं तो वो आता है हमारा 136। राइट, सर अगर देखा जाए तो फिर रेंज जो है 151 से लेके 136 के बीच में होना चाहिए ना, मतलब घूम के।
Correct. 136 The to range, 151. the stars which will be crossing your meridian will be within SHA 151 and 136. That is correct. वहाँ पर सर जहाँ पे भी देखा है ना आपने, जो सोल्यूशन भेजा उसमें तो 136 और 151 के बीच में दिया हुआ है, या जो Okay. दूसरे है। ओके ऑल राइट। आप चाहो तो उसे 151 to 136 भी लिख सकते हो, आंसर तो सेम ही रहना है बेटा। तो लेकिन सेम कैसे, अगर मैं वही डाउट है, जैसे 1 से 136 ओके सर वो तो मैं पूरा समझ, वही बहुत है बड़ा तो रेंज आ नंबर जाएगा। 1, तुम ये बोल रहे हो। नंबर 1 क्वेश्चन में इशू आया था। ओके यस सर, आप समझ गया अभी, वो घूम के हो बेटा, जाएगा, मतलब 151 मैं से तो बहुत बताता हूँ, ज्यादा हो जाएगा। मैं बताता हूँ। देखो 1800 पे जो स्टार तुम्हारे मेरिडियन पे है उसका SHA यस था सर, 151। यस सर, 1900 पे जो स्टार तुम्हारे मेरिडियन पे है उसका SHA आया 136। यस सर। तो जो स्टार अब क्रॉस कर रहे हैं उनका SHA कम हो रहा है बेटा, बढ़ नहीं रहा है। सबसे ओके सर, पहले ओके सर, ओके सर। 151 वाला क्रॉस करेगा, फिर देन 150, फिर 150। 149, ओके 148, सर, दैट वे। जब वही भी मेरे को स्टार कंफ्यूजन तुम्हारे, हो रहा है कि हम लोग उसके रेंज में, अगर हम जैसे रेंज ले रहे हैं ना कि इस रेंज के अंदर कौन कौन से स्टार आएंगे, तो ऐसे तो फिर वो उल्टा हो जाएगा और पूरा बहुत सारे आ जाएंगे। नो वो रेंज नहीं यस लेनी यस बेटा। आपने ये देखना है 1800 पे ये SHA था, यस 1900 सर। पे SHA रिड्यूस होके 131 136 हो गया है। तो आपने भी रिड्यूस ही करना है, 151 से रिड्यूस ही करना है आपने भी। अदरवाइज तो वो बाकी के स्टार्स आ जाएंगे जो बिल्कुल मेरिडियन को क्रॉस नहीं कर रहे। यस तो वही एक्चुअली वही तो। सर दूसरा डाउट, सर जब वो बोलते हैं कि बिलो द मेरिडियन, बिलो द पोल, तो वो सर्कमपोलर का क्राइटेरिया हो गया। यस, मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा उसे बिलो द पोल क्यों बोलते हैं, आज का टॉपिक है हमारा। यस सर। सर जब हम लोग उसका करते हैं सॉल्व, तो हम जो है ये देखते हैं कि लैटिट्यूड डेक्लिनेशन शुड बी सेम, और उनका सम जो है 90 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, करेक्ट सर? बेसिकली अगर इसको समराइज करें तो हम सर्कमपोलर क्राइटेरिया देखते हैं। सर्कमपोलर क्राइटेरिया देख रहे हैं, अगर उसमें यस, आ रहा है तो हमारा स्टार जो है इज सुटेबल फॉर ऑब्जर्वेशन। दैट इज राइट बेटा। ओके सर, ओके सर, एक्सक्यूज मी सर, प्रॉब्लम है कल से मेरे को नहीं आ रहा है स्क्रीन पे कुछ, आप सबके नाम आ रहे हैं लेकिन फोटो वोटो नहीं आ रही है कुछ। आप वॉक आपकी फोटो पे मोबाइल पे दिख रहा है लेकिन मेरे सिस्टम पे नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रही है कल बेटा। से प्रॉब्लम सर मेरे साथ भी ऐसा परसों होता था भाई, रिस्टार्ट करके लैपटॉप आप मेरा भी ऐसे ही हुआ था परसों। हाँ, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा। मैं अभी फिर से रिस्टार्ट मैंने भी अभी किया। हाँ, इट इज ए बेसिकली इंटरनेट स्पीड इशू, बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट कमिंग। सर और एक डाउट था। बोलो जी। सर वन मिनट सर, ये जो क्वेश्चन आपने भेजे हैं, उसमें कुछ कुछ बहुत सारे, मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे गलत किए हैं सॉल्यूशंस गलत है, उसमें। सोल्यूशन हाँ गलत है बेटा। कुछ कुछ कहाँ पे? गलत है सर। जो शीट सॉल्व कर रखी है उसमें गलत है, या जो आंसर दे सॉल्व रखे सॉल्व हैं मेन शीट नहीं पे सर, वो जो गलत? आंसर दिया हुआ है शीट तो में, जो दैट्स आंसर ओके, दिया देयर कैन बी अ डिफरेंस। तुम सोल्यूशन को देखना बेटा, आंसर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। यस यस, और सॉल्यूशंस में भी एक दो जगह थोड़ा गलत था, मतलब लिखा था साइड में कहीं। ओके, तो मैं बाद नो में आपको इश्यूज, बताता हूँ। नो प्रॉब्लम। अगर सोल्यूशन में कहीं पे मिलता है जस्ट फ्लोट इट ऑन द ग्रुप, अदर पीपल व्हेन दे डू इट दे विल कंफर्म वेदर दिस वाज राइट और रॉन्ग। यस सर, ओके। ओके, सर एक डाउट था सर, बोलो बेटा। एक अपने स्टार टेबल रहता है उसमें VAR.22 करके कहीं ऐसे मतलब अलग अलग वो हैं वेरिएबल। टेबल टेबल के वहाँ, तो उनकी वैल्यू जो नीचे से है वो लेनी है, उनको भी देखना हमें कंसीडर करना सर। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा। जो स्टार टेबल है हमारा, उसमें जो मैग्नीट्यूड कॉलम है वहाँ पे किसी स्टार के आगे आपको VAR या कोई साइन ऐसा कुछ दिख सकता है। हाँ जी। जब आप उस पेज के बॉटम में जाओगे तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। वहाँ पे बेसिकली वो रेंज बताएंगे एक आपको कि इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, एंड द रेंज इज, लेट अस से फॉर एग्जांपल, बिटवीन 0.5 to 1.5। ठीक है सर। ओके, अब हमने ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, लिसन केयरफुली। आप उस पूरी रेंज को देखो, अगर उस रेंज का कोई भी पार्ट आपके क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहा है, any हाँ part जी, of that range if it is matching with the criteria of the question, तो हमने तो हम उसे start आंसर में लिखना है, इंक्लूड कर देना है।
साथ में एक Okay. रिमार्क लिख देना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टार इज वेरिएबल, दैट्स ऑल। ओके सर। एंड ठीक है सर, ये हो गया। एंड सर अपना जैसे प्लैनेट्स का एसएचए तो हमें मिल जाता है ना। अब जो डेक्लिनेशन मिलती है वो हम अक्रॉस द डेली पेजेस पे जीएमटी के उसमें देखते हैं, तो राइट वो बेटा, उस डेक्लिनेशन में डी करेक्शन लगानी सर। नॉट रिक्वायर्ड बेटा, आप नियरेस्ट Okay. आवर की डेक्लिनेशन भी लिख दो, दैट इज फाइन, नो इश्यूज। ठीक है सर। ओके, एक क्योंकि तो डाउट है सर। प्लेनेट की डेक्लिनेशन जो है इट इज डज नॉट चेंज वेरी रैपिडली, सो यू गो टू हाँ द जी, नियरेस्ट आवर एंड राइट इट, नो नीड टू अप्लाई डी करेक्शन। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन में हमें दे रखा था पीएम नॉटिकल टॉयलेट, राइट और उसके दो क्वेश्चन छोड़ के दे रखा था पीएम नॉटिकल टॉयलेट, और बोल्ड में लिखा था सूटेबल फॉर ऑब्जर्वेशन। राइट, तो जब हमारा ये पीएम नॉटिकल टॉयलेट लिखा तो वो सनसेट टू जो नॉटिकल टॉयलेट का टाइम वो पूरा हो गया, और जब वो बिल्कुल सही। सूटेबल लिखा है, मतलब सर सूटेबल तो सिर्फ नॉटिकल टॉयलेट में ही होगा। तो सूटेबल होगा, मैं बताता हूँ, सूटेबल होगा बेटा 6 डिग्री टू 12 डिग्री। हाँ जी अगर सर, हाँ जी, पीएम हाँ जी, पीएम की बात सिविल कर रहा एंड है से सूटेबिलिटी के, हाँ तो वो जी, हो हाँ जी, जाएगा एंड ऑफ सिविल टू एंड ऑफ नॉटिकल। हाँ जी सर, हाँ जी। यही डिफरेंस है तो दोनों में। सूटेबल फॉर साइट जहां पे लिखा गया है वहां लेना है 6 टू 12, और जहां नहीं लिखा गया है वहां नॉर्मल नॉटिकल ट्वाइलाइट 0 टू 12। ठीक है सर। और एक जगह लिखा पीएम सिविल टॉयलेट, पीएम सिविल टॉयलेट, तो उस केस में सिर्फ हम सिविल टॉयलेट का टाइम ले रहे हैं सर, मतलब उसके लिए हम कुछ ऐसा सनसेट का टाइम वगैरह नहीं लिया, सिर्फ एक ही टाइम लेके पर उसमें क्वेश्चन में ये दिया था कि 15 डिग्री ऑफ द दैट ऑब्जर्वर। राइट बेटा, तो पीएम सिविल ट्वाइलाइट का मतलब है जो एंडिंग ऑफ सिविल ट्वाइलाइट होती है इवनिंग में, वो टाइम हाँ हम जी, पिक करेंगे। उसके लिए ठीक एक है, एसएचए आएगा और हम उसमें हाँ प्लस जी, माइनस 15 डिग्री कर देंगे तो रेंज मिल जाएगी। ठीक है सर। ओके, सो एक सर, लुक्स लाइक अंकित हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट। सर एक नंबर 4 क्वेश्चन था ऐसे सर, जब ये जीएमटी एलएमटी का होता है सर, अब हम एक जैसे 1 2 3 डेट है एक पेज पे दे रखा है, अब 4 5 6 हो गया, अपना जीएमटी टाइम 4 पे चला गया, 3 से 4 पे चला गया, डेट 4 पे। तो जो प्लेनेट का हम एसएच से चेक करेंगे, दैट इज फॉर द जीएमटी टाइमिंग्स और फॉर दैट थर्ड, जैसे क्वेश्चन में थर्ड दे रखा है, थर्ड का लोकल टाइम दे रखा है। जीएमटी डेट बेटा, जीएमटी डेट। तो अगर जीएमटी फोर्थ हो गई है तो हम जीएमटी के लिए चेक करेंगे उसको सर, राइट, मतलब नेक्स्ट वैसे पेज, कोई पेज। प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट यू ऑलवेज गो फॉर द जीएमटी डेट। ओके सर, क्योंकि वो एसएचए में थोड़ा वो ऊपर नीचे हो जाते, तो स्टार वो प्लेनेट कौन सा सूटेबल है वो पता लगता है। एक क्वेश्चन में ना प्लेनेट मिसिंग था सर, मतलब प्लेनेट कंसीडर नहीं किया था, वो भी मेरे को समझ नहीं आया क्यों नहीं किया। उसमें- मतलब देयर इज अ प्लेनेट एंड अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन में नहीं, वो प्लेनेट लिया नहीं था, फॉलिंग इन अच्छा, दैट इज सेंस। इट वो इसमें में तो आया नहीं मेरे में तो कोई प्लैनेट। कौन सा क्वेश्चन? होना नहीं चाहिए वैसे। यहाँ तो मैंने वही यही डाउट था कि मैंने उस लोकल टाइम के लिए चेक कर लिया होगा, तभी डाउट अराइज हुआ कि लोकल टाइम के लिए करना है या जीएमटी के लिए। ओके, बट सर जब चेक करना होता है हम तो एसएचए को लेके चेक करेंगे ना, विद इन दैट रेंज, जो साइड में जो टेबल दिया हुआ है, तो अगर उसमें फॉल करेगा तभी हम उसको दे देंगे। वी शुड बी एबल टू गेट इट। बेटा कौन से क्वेश्चन में प्लेनेट मिसिंग है, कैन यू टेल क्वेश्चन मी? नंबर 6 सर, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 मैं अभी यहाँ ओपन कर लेता हूँ, लेट्स हैव ए लुक, हाँ जी, हाँ जी। डाउट क्लियर हो जाएगा। नंबर 6 में ना, लेट्स गो टू नंबर 6। ये हम आ गए नंबर 6 पे बेटा। नंबर 6 में एसएचए की रेंज है 251 टू 259। करेक्ट है बेटा? मुझे बताओ कौन सा प्लेनेट आ रहा है? 14 अक्टूबर है बेटा, जीएमटी 13 की है, सो 13 तारीख को बताओ बेटा कौन से प्लेनेट का एसएचए 251 टू 259 आ रहा इसमें सर प्लेनेट है ही नहीं सर, क्वेश्चन में क्वेश्चन में पूछा ही नहीं। है? पूछा ओके ही नहीं, ओके ओके, ऑल पूछा राइट। ही नहीं है सर, हाँ तो तो फिर क्यों पूछा आएगा? नहीं बेटा, क्वेश्चन में अगर नहीं पूछा है ओके तो ओके, देन वी विल नॉट मेंशन है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है।
ओके ओके ऑल राइट, एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट था सर, ये छोटा सा डाउट है। बोलो बेटा। सेकंड क्वेश्चन में 30 नवंबर और जब हम LIT लगाते हैं तो हमारा GMT 1 दिसंबर हो जाता है। ठीक है, तो जब हम SHA लेते हैं तो वही ना, तो दिसंबर की लेंगे ना सर, नवंबर का नहीं लेंगे सर? हाँ दिसंबर का लेंगे बेटा। नवंबर टू दिसंबर, एक महीने का सीधा इसमें- चेंज हो रहा है ना सर? ओके, थैंक यू। या टेक सर, इट फॉर इसमें दिसंबर, नंबर नो इश्यूज। और सर इसी सर, ये सेकंड क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड अप टू 3.0 तक मैग्नीट्यूड तक पूछा था, तो इसमें एक और स्टार आ रहा था, वो ऐड नहीं किया हुआ सॉल्यूशन। कौन सा स्टार आ रहा है बेटा? सर ये एस कैप्रिकॉनी, इसका मैग्नीट्यूड 3.0 है। 3.0 और इसका SHA कितना है बेटा? 33 डिग्री 20। नहीं, तो क्रॉस हमारी कर जा रेंज रहे हैं 33-18 तक है ना बेटा? 18 तक है रेंज। बाहर हो गया ना, बाहर हो गया। 33-18.1। ओके ओके सर, ओके गॉट इट। सर, ओके। इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे सर। नंबर 7 ओके, ये रहा बेटा। एक्स मेरिडियन वाला सर, इसमें सर ये लास्ट स्टार क्यों नहीं लिया सर? नो लिखा ना उधर सर। बेटा Why we cannot- एक मिनट, सर 80 से ज्यादा हो गया सर। हाँ 83 हो गया ना बेटा एल डिफरेंस डी। ऑल ऑल्टीट्यूड, अच्छा ओके सर। लेस देन 80 होना So चाहिए ना। L difference Less than D 80. more than 80, not we will not use it for site. ठीक है सर। Okay. सर वन मोर डाउट सर। सर जब क्वेश्चन में पूछा होता है, जैसे मतलब ये पूछता है कि within 30 degree of the observer's meridian will be available for observation at the end of PM civil twilight। तो सर ये Okay. मतलब क्या पूछ रही है? विजिबल के लिए पूछ रही है कि सूटेबल के लिए पूछ रही है? ओके तो लैंग्वेज देखनी पड़ेगी बेटा क्वेश्चन की। नंबर 7 की ये बात कर रहे हो मैंने आप? ना ग्रुप में डाल, नहीं सर ग्रुप में डाला मैंने। इसमें ना सॉल्व पेपर था लास्ट, तो मैं चेक कर रहा था उसपे। ओके अभी देख लेते हैं, ग्रुप पे डाला है ना आपने? यस सर, उसमें जो है 89 डिग्री, उसमें भी वो ये सही है वाला। ओके जस्ट अ मिनट, लेट मी रीड इट। 21st July, which star and planets of the first and second magnitude within 30 degrees of the observer meridian will be available for observation? अब उसने बोल दिया बेटा अवेलेबल फॉर ऑब्जर्वेशन, तो हम इसमें सूटेबल फॉर साइट का क्राइटेरिया चेक करेंगे। अब इस केस में जो इन्होंने आंसर लिखा है इसमें बेटा 89 में इन्होंने कर हाँ दिया है। ये 89 वाला नहीं आएगा। एंड नहीं आएगा यस सर। देखो 8048 और 8020 ये दो स्टार आ रहे हैं। ओके आप इनके आगे ना रिमार्क में लिख सकते हो दैट दे आर वेरी क्लोज टू 80 डिग्रीज, सो may be used, it is up to the observer, they may be used for sight because it is very close to 80, almost close to the limit, so you can say it can be used if required, but preferably other stars should be used. ओके सर सर लेकिन बाकी सब सर जैसे आपने दिखाया है टिक मारना हो सूटेबल नॉट सूटेबल, वैसे ही करते तो भी चलेगा ना ये? हाँ चल जाएगा बेटा, अगर टाइम नहीं है, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, जस्ट पुट अ टिक और ए क्रॉस, दैट शुड आल्सो बी ओके। सर इसने ये नीचे नोट्स में वो लिख दिया ना 90, इसने 80। अब बेटा इसने दोनों को ना मिक्स कर दिया। स्टार्स आर अवेलेबल अबव द रैशनल हॉराइजन, ऐसा नहीं होता। 10 डिग्री से नीचे एल्टीट्यूड वाले स्टार्स को इवन दो दे आर विजिबल टू अस वी डू नॉट यूज फॉर साइट। ओके इन्होंने दोनों को मिक्स अप कर दिया है। ये सब पास पेपर सॉल्व्ड है। अब ये ना होना कि वहां जाके हम करें और एग्जाम में एग्जामिनर इसको देख के कर रहा हूँ। बेटा अब एग्जामिनर को तो जो सही चीज है वो करनी चाहिए। ओके यस सर, मैंने जो तुम्हें बताया है आई हैव गिवन यू ए लॉजिक फॉर ईच एंड एवरीथिंग। यस सर वो तो सही है, वो उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। एग्जैक्टली अगर आपको डाउट है, आप ये सोचते हो कि एग्जामिनर ऐसी गलती कर सकता है, तो आप वहाँ एक रिमार्क लिख दो ना दैट ओके सर, यूजिंग जो आपका रिमार्क है लेस देन 80 डिग्री, आप रिमार्क लिख दो वहाँ पे
For sight taking, we do not use the stars which are within 0 to 10 degrees. Even though they are visible, we will not be using them for the sight. तो एग्जामिनर जब उसे पढ़ेगा उसको क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को ये भी पता है कि स्टार होराइजन के ऊपर है, बच्चा फिर भी ये लिख रहा है कि नॉट सूटेबल फॉर साइट है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन. अच्छा ज्ञानी है. ओके सर, अंडरस्टूड सर. ओके सर मेरा वो वाला डाउट सर क्लियर नहीं हुआ. ये अंकित ने पूछा था जो वाला कि कब 0 to 12 लेना है और कब 6 to 12 लेना है सनसेट के टाइम. अब तुम्हें ना वो अंकित बताएगा बाद में. अंकित संजोत को समझाओ बेटा. ठीक है भाई, करते हैं 8 बजे के बाद. ओके ओके ऑल राइट. अब सर बेटा ये जो बाकी के रेंज वाला doubt सर जो एक बार है बताएंगे सर. रोक देते हैं बेटा. बाकी के डाउट अब यहाँ रोक देते हैं, अदरवाइज विल मिस आउट ऑन टुडेज टॉपिक. अगर टॉपिक के बाद टाइम बचेगा विल पिक देम अप अगेन. ओके. काफी सारे डाउट जो सरकमपोलर से रिलेटेड हैं वो आपके अभी सॉल्व होने वाले हैं, बिकॉज मैं अभी आपको डिटेल में सरकमपोलर बॉडीज कराने वाला हूँ. ओके बेटा. हाँ जी हाँ जी. ओके ऑल राइट. सो लेट्स मूव ऑन बेटा. हम अब सबसे पहले चल रहे हैं सरकमपोलर बॉडीज पे. मैं पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फंडामेंटल बता रहा हूँ कि ये होता क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं हम, और फिर इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल देखेंगे. द रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड देन द न्यूमेरिकल, हाउ द न्यूमेरिकल इज टू बी अटेम्प्टेड. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. ये हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 and 9 उन पे अब हम टारगेट कर रहे हैं. वी हैव डन अप टू 4, 5, 6, 7, ये 4 हमने किए हैं. 8 and 9 is what we are targeting now. So let's go into the presentation for circumpolar bodies. In this presentation, we are going to learn about circumpolar bodies. The literal meaning of the word circumpolar is making circles around the pole. Now, fundamentally speaking, all the celestial bodies, they move in circles around the pole. All the celestial bodies move on their declination circles, and all these declination circles are centered at the pole only. But as far as the circumpolar term is concerned, we call those bodies as circumpolar whose circular motion is visible to us. The complete circular motion around the pole is visible to us. In other words, a body is said to be circumpolar if the body is always above the rational horizon of the observer. That is, the body should not set. During the full day, the body should not set. These type of bodies are called as circumpolar bodies. They remain above the horizon of the observer, and you are able to visualize or you are able to see them at any time of the day for full 24 hours. Now let's try to understand when does a body become circumpolar, or what are the conditions which lead to a body becoming circumpolar. This can be easily understood from a rational horizon diagram. Now let's assume that our observer is in northerly latitude in the north hemisphere. You can assume latitude close to 40 degrees north or so. And let's make a rational horizon diagram for the observer. We have the rational horizon. We mark off the NESW points on the rational horizon. Then we mark the celestial meridian of the observer. We mark the prime vertical circle. Exactly at the center of this diagram is the zenith of the observer represented by Z. Now, since the observer is in the north hemisphere, the latitude is north, equinoctial will be passing south of the observer. So from point Z, if we go down south equal to our latitude,
Now that gives us the point from where the equinoctial will be passing. It is represented as point Q in the rational horizon diagram. We are aware that equinoctial always passes from west and east points. So now we know that the equinoctial will pass from W, Q and E, and we can now show the equinoctial in our diagram. We have the equinoctial here. Now once the equinoctial is there in the diagram, we can also show the pole. In this case, the observer is in north hemisphere, so the north celestial pole will be the elevated pole or the visible pole, and it will be 90° away from the equinoctial. So 90° away or 90° north of the Q point, this is where the pole would lie. So let's mark this point as P, representing the north celestial pole. Now in this diagram, let's assume some celestial bodies of different declinations and let us see whether they become circumpolar for this particular observer or not. Let us first assume a body with a declination opposite to the latitude. The latitude in this case is north, so let's assume a body having a southerly declination. Now in this diagram, we are aware that this N point is on the horizon. The P point represents the pole, and this N to P, what is highlighted by this yellow line, is called as the elevation of the pole or the altitude of the pole. And this is always equal to the latitude of the observer. We can easily understand it from the diagram. Now, the N point is 90° away from the Z point, from the zenith, because every point on the rational horizon is 90° away from the zenith of the observer. Similarly, the P point, which represents the pole, is 90° away from Q point, which is the equinoctial. So P to Q is 90 degrees, that is pole to equinoctial. N to Z is 90 degrees, that is rational horizon to zenith. So therefore, what is the arc ZQ? It will be exactly the same as arc NP. ZQ was the latitude of the observer, so NP, which is the altitude of the pole or elevation of the pole, will also be equal to the latitude of the observer. So let's now assume some celestial body. As I told you, first let's assume a body having a southerly declination. So we have a star here. You can see it is south of the equinoctial, having a southerly declination. Let's try to show the path of this star, the path on which this moves, that is the declination circle of this particular star. All the declination circles are parallel to the equinoctial. So the declination circle of this particular star parallel to the equinoctial would appear something like this. The declination circle shows us the path on which the body moves. Now this body is going to rise at this particular point on the horizon. You can follow the laser pointer on the screen. This is the point where the body is going to rise on the eastern horizon. After rising, it will move on its declination circle. It will cross the meridian of the observer at this particular point and then cross over to the western side, and eventually it will go and set at this particular point on the western horizon. And we can see here that this body is certainly not circumpolar, because at this particular point it is going to go below the horizon of the observer. Now you could have picked up a body of any southerly declination lying between Q and S points, and you will see that all those bodies' declination circle will hit the western horizon at some point, making that body go below the horizon. So any body with a declination opposite to the latitude will not be a circumpolar body. So this is one thing which we have seen now.
Now let's assume a second celestial body with its declination of the same name as latitude of the observer and see whether it becomes circumpolar or not. So you can see in the diagram, this is the rising point of the body. A body moves in this particular direction represented by the arrow and then eventually sets at this particular point. Now let's assume a second body here. Now this star is north of the equinoctial and the declination of the star is of the same name as the latitude of the observer. Let's try to show the declination circle of this particular star. The declination circle will pass through the body and it will be parallel to the equinoctial. So this is how the declination circle is going to appear. On this declination circle, the body will be moving in this particular direction represented by the arrow. The body will be rising at this particular point, moving in this particular direction, crossing the meridian here, and at this particular point, the body is going to set. So we saw that even this particular body is not circumpolar. So it is not necessary that with lat and dec of the same name, a body should certainly be circumpolar. Let's try to increase the declination a little bit now. Let's assume a third body, this particular star now. This is also having a northerly declination, but the declination is more than what we had in the previous case. Let's try to draw the declination circle of this particular star. Now declination circle will pass from the body and it will be parallel to the equinoctial. Now in this case, the declination circle is going to be like this. All the declination circles are centered at the pole. So centered at the pole, polar distance equal to px, pole and the body. If you draw a circle, that gives you the declination circle of this particular star. Now the arrows show the direction in which the star will be moving on this particular circle. Now we can clearly see that the entire declination circle of this particular star is above the horizon of the observer. It touches the horizon at the north point, but never goes below the horizon. So these bodies which remain above the horizon of the observer for full 24 hours and never set are circumpolar bodies. So one thing we have seen from this diagram that it is certainly not possible to have a body circumpolar with lat and dec for opposite names. So one condition which we can pick up from this rational horizon diagram is that for a body to be circumpolar, the first condition is the latitude and declination. Latitude of the observer and declination of the body should be of the same names. Now beta, any doubts coming in your mind up to here? Okay, great. So let's move ahead. Let us see what is the second condition. Now in this diagram, I have also shown the polar distance of the body, P to X. This represents the polar distance of this circumpolar star, and it is always equal to 90 minus declination. So polar distance in this case, which is 90 minus declination, is shown in the diagram. Now we can clearly see in this particular diagram that for a particular body to be circumpolar, the polar distance of the body, which represents the radius of the declination circle, should always be less than or equal to NP. If the polar distance is more than NP, then you can clearly see from the diagram that the declination circle will go beyond the horizon of the observer. It will go below the horizon of the observer.
making the body not a circumpolar body. If it has to be circumpolar, the radius of this circle, that is px, should be equal to or less than np. If the radius is equal to np, you will have exactly this particular condition. The circle will be touching the horizon at point n, and if the radius is less than np, then the entire circle will be within the rational horizon of the observer. So we understand from this diagram now that for a body to be circumpolar, this condition should be met. That is, the polar distance of the body should be equal to or less than the elevation of the pole, or NP. Now, NP, or elevation of the pole, is equal to the latitude of the observer. So we now come to this relationship that Px, which is the polar distance, should be less than or equal to Np, which is the latitude. Now, polar distance is equal to 90 minus declination. So this converts the relationship into 90 minus declination should be less than or equal to the latitude of the observer. Now, if I take declination to the other side, to the right hand side, the relationship becomes latitude plus declination should be greater than or equal to 90 degrees. So this is the second condition which needs to be fulfilled for a body to become circumpolar. The first condition which we saw in the previous slide was that the latitude and declination should be of the same names. The condition which we saw in this particular diagram is latitude plus declination should be greater than or equal to 90. So these are the two conditions which needs to be met for a body to become circumpolar. Latitude and declination same names, and latitude plus declination greater than or equal to 90 degrees. So remember these two conditions for a body to become circumpolar. Any doubts coming now, beta? You can ask me. Sir, could you go back to previous slide, sir, for the screenshot? Okay, beta, I'll go back. This slide is clear? Yes, sir. Okay, all right. Yes. Great. This is the previous one, beta. Yeah, thank you, sir. Okay. Let's move ahead. Let's see some more concepts ये related. बोलो बेटा. ये जो साउथ डेक्लिनेशन वाला था, राइट, स्टार, इसमें आपने क्या बोला सर? ये भी इसका जो सर्कल बियॉन्ड एन जाएगा? बेटा ये जो साउथ डेक्लिनेशन वाला स्टार है, कोई भी साउथ डेक्लिनेशन का स्टार अगर आप लोगे तो उसका डेक्लिनेशन सर्कल तो हॉराइजन के बाहर चला जाएगा ना. If it goes outside the horizon, that means it is going below our horizon and setting. So this will not be circumpolar. मतलब इन दोनों केसेस में, नॉर्थ में भी जो है और इस वाले नॉर्थ केस में वाला जो हमने लेस डेक्लिनेशन वाला स्टार लिया था उसका सर्कल भी हॉराइजन के बाहर जा रहा है बिकॉज उसकी डेक्लिनेशन सफिशिएंट नहीं थी. Our declination should be such so that lat plus dec is greater than equal to 90. ओके सर. Okay. So let's move ahead. Now we have seen that when a celestial body becomes circumpolar, it remains above the horizon of the observer for full 24 hours. Now, if the same concept is applied to the sun, that means for a particular observer, if the sun becomes circumpolar, it will mean that the sun will remain above the horizon of the observer for full 24 hours of the day.
this will result into what we call as a continuous day or a 24 hours day. In some of the questions, this concept of continuous day or a 24-hour day is used. So in these type of questions, we should be aware that if the sun becomes circumpolar for an observer, he will have 24 hours daytime and no night. This happens close to the poles in higher latitudes above about 66.5 degrees north and south. In the polar regions, you have 6 monthly days and 6 monthly nights. Whenever the sun's declination matches with the declination of a particular pole, it will always remain above the horizon for that observer, leading to 24 hours day. So thus, if the sun fulfills the circumpolar criteria, there will be a 24 hours day and there will be no night for that particular observer. So in case the conditions for continuous day are asked to us in the question, they will be same as the conditions for circumpolar bodies. That is, the latitude of the observer and the declination of the sun should be of the same names, and the latitude of the observer plus the declination of the sun should be greater than or equal to 90 degrees for the sun to be circumpolar, resulting in a 24 hours day or a continuous day and no night at that particular latitude. Any doubts up to here, beta? Sir, for this condition, the diagram we have to draw the upper one, right? The circle, and not the south pole, south declinations and the north declinations. Right, beta, right. Those stars you don't need to show. वो मैंने सिर्फ आपको explain करने के लिए बनाए थे. Okay, sir. Thank you. Okay, great. So in the exam, they will ask for the continuous day. We have to draw this PGX. Beta, they can ask you a theory question also. What are the conditions for a continuous day? Or they can give you a particular declination and they can ask you what latitude will have a continuous day. Okay, let's move ahead. Now, in some of the questions, instead of asking the conditions for a continuous day or 24 hours day, they ask us the conditions for a continuous night or a 24 hours night. It basically means that the sun should remain below the horizon of the observer for the full 24 hours, and in that case, the observer will have 24 hours night and there will be no day. There will be no sunrise, there will be no sunset. The sun is going to remain below the horizon of that particular observer for full 24 hours. Now this condition is possible when the following conditions are fulfilled. Number one, the latitude and declination should be of the opposite names in this case. For sun to remain below the horizon or for a continuous night or 24 hours night, the latitude and declination have to be of the opposite names. It is only possible when the lat and dec are of the opposite names. And the second condition is that latitude plus declination of the sun should be greater than 90 degrees. So these are very similar to the circumpolar conditions, only difference being in circumpolar the latitude and declination should be of the same name, and in a 24 hours night scenario or continuous night scenario, the latitude and declination should be of the opposite names. We can understand it very easily from the rational horizon diagram. You can see this rational horizon diagram. We have an observer in the northern hemisphere. We can see the pole. We can see the equinoctial as WQE. Now in this diagram, we are aware that the portion or the arc ZQ
represents the latitude of the observer. Q is the equinoctial, Z is the zenith. So ZQ represents the latitude of the observer. Now our first condition says that the declination should be of opposite name to the latitude. So in this case, if the latitude is north, the declination should be south. South declination means that the sun would be below this point Q. So the sun would be southwards of point Q, which represents the equinoctial. The sun will be southwards of the equinoctial. Now if the sun is between point Q and point S, it has southerly declination, but it will still be coming above our horizon. If the sun passes our meridian between Q to S, it will still be coming above our horizon. There will be a sunrise and there will be a day for some parts of the 24 hours. But if the declination circle of the sun goes beyond point S or further south of point S, then in that case, the entire declination circle of the sun will remain outside our rational horizon and the sun will never come above the horizon. So let me show you in the diagram. If the declination of the sun is such that it has gone beyond point S or southwards of point S in our diagram, you can see the declination represented in maroon, and the declination is such that the sun has gone beyond point S. In this case, the declination circle of the sun, you can see this dotted line showing the declination circle of the sun. The entire declination circle of the sun will remain below the observer's horizon, making it a 24 hours night. There will be no sunrise, the sun is not going to come above the horizon of the observer, and there will be no daylight. Now we are aware that from the Z point to the S point, Z is the zenith, S is the south point on our rational horizon, the total arc length is 90 degrees. From the zenith to the horizon, the arc length is 90 degrees. And we know ZQ is the latitude. Now this is the declination Q to S. So if latitude plus declination is greater than 90, it immediately tells us that the declination circle will pass beyond our rational horizon, or the sun is going to remain below our rational horizon. So that's why the condition latitude plus declination of sun should be greater than 90 degrees for the sun to remain below the horizon for 24 hours, resulting in a 24 hours night or a continuous night. Whenever the sun has a northerly declination, in that scenario, the south pole has a continuous night or a 24 hours night, because lat and dec are of opposite names and the latitude plus declination is greater than 90. The same thing happens when the sun is having a southerly declination. There is a continuous night or 24 hours night on the north pole. Go ahead with your doubts now, beta. सर इस केस में जो सन होगा वो सर्कमपोलर नहीं होगा ना? That's right, beta. Forget circumpolar. The sun will not come above the horizon at all. Yes, sir. Sir, No, I didn't get you. Ask again, beta. Right. Yes. बेटा ऑपोजिट नेम के ही होने चाहिए और इन दोनों का सम ग्रेटर देन 90 होना चाहिए. दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो ही 24 आवर नाइट बनेगी. Right. So sir, for continuous day ka is same like circumpolar bodies, or continuous night ka is opposite to circumpolar but only equal sign नहीं है उसमें. Correct, because अगर और आप lat and dec opposite.
Yeah, that's right. हमने equal to sign इसलिए नहीं लगाया बेटा, because equal to was considered above the horizon. Yes. So that is why we have removed the equal to sign here. Okay. Okay, beta. Great. Let's move ahead. Now going a little more deeper into the circumpolar bodies, we had this particular star, and the polar distance is less than or equal to NP in this case. And you can see the entire declination circle of the star is within the rational horizon of the observer. So this is a circumpolar star. Now, the direction of this, the motion of the star is represented by these two arrows. Now, in this particular diagram, we can see that the star comes north of the observer at two instances. At point A here, it will be north of the observer. The bearing of the star would be 0, 0, 0. And again, when it reaches or crosses the meridian at point B, it will be again north of the observer with a bearing 0, 0, 0. Now this is only possible in case of a circumpolar body. For a normal body which is not circumpolar, it will come north or south of you, or in other words, you can say it will come on your meridian only once in a day. But a circumpolar body will be north or south of you twice in a day. Roughly after an interval of 12 hours, it will be south or north of the observer 2 times in a day. Now both of these instances are called as meridian passages. One of them is the meridian passage on the observer meridian. If you look carefully in the diagram, P is the pole and P, Z, Q, S is the observer's meridian, and you can see that at point B, the body crosses the meridian of the observer. Now at the second instant, that is at point A, it is crossing the inferior meridian of the observer, or the opposite meridian of the observer. You see, when you go on other side of the pole, this represents your inferior meridian, reciprocal meridian. So at point A, the body crosses the inferior meridian of the observer. At point B, it crosses the meridian or the observer's meridian. Now point A is known as meridian passage on the inferior meridian. You can call it the meridian passage of the body on the inferior meridian, or you can also call it meridian passage below the pole. Now why do we call it meridian passage below the pole? That also can be seen easily from this diagram. We know N to P is the elevation of the pole or the altitude of the pole. So N to P represents the elevation or altitude of the pole. N to A represents the elevation or altitude of the body at the time of meridian passage on the inferior meridian. And we can clearly see that the altitude of the body is lesser than the altitude of the pole. That is why at this particular instant, that is at point A, the meridian passage of the body is below the pole. Now this is, for this particular reason, this is also called as lower meridian passage or lower marpass. At the same time, the point B which you see is known as the meridian passage on the observer's meridian. Point B represents the meridian passage on the observer's meridian. It is also called as meridian passage above the pole, because you can see at this point the altitude of the body is represented by NB, November Bravo. The altitude of the pole is NP, November Papa, and the altitude of the pole is less than the altitude of the body. The body is at a higher altitude at point B. So that is why it is called as meridian passage above the pole. And
It is also known as upper Marpas or upper meridian passage, because at point B the body is above the pole, it is at a upper location than the pole. So upper Marpas and the lower Marpas. Upper Marpas or meridian passage above the pole is on the observer's meridian. Lower Marpas or meridian passage below the pole is on the observer's inferior meridian. Now, if you remember, when you look for the meridian passage time of the moon in the almanac, there are two times which are given, one under upper and other under lower. This upper and lower basically means the meridian passage of the moon on the observer's meridian, that is for upper, and for lower, it is the meridian passage of the moon on the observer's inferior meridian. Any doubts coming in up to here, beta? Sir, one doubt. बोलो बेटा. सर ये कंटिन्यूअस नाइट के लिए सर आप बोले ना सर शुड बी ऑपोजिट नेम, लैट एंड डेक ऑपोजिट नेम. राइट. तो उसमें सर अदर पोल में अभी वो सर्कमपोलर हो रहा है क्या सर? एग्जैक्टली बेटा. ओके ओके ओके. On one pole it will be circumpolar, on the other pole it will be 24 hours night. Okay, 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 okay. Okay, great. Let's move ahead then. So we are done with the basics now. Let us see a numerical question now, the type of questions which come in our exams based on this concept. Let's go. Let's now practice a numerical question based on the concept of circumpolar bodies. We have the basic understanding of the circumpolar bodies now. So let's go into this question. The question says, to a stationary observer, an unknown star bore 000 true with a true altitude of 78 degrees 12 minutes. After about 12 hours, the same star bore 180 true with a true altitude of 18 degrees 54 minutes. We have to calculate the observer's latitude and the star's declination. So a very straightforward and simple looking question. You observe here in this question that the star is bearing 000 at a particular time, and after about 12 hours it is again bearing 180. So at one time it was north, at other time it was south. So this is only possible in case of a circumpolar body. Otherwise, for bodies which are not circumpolar, they come north or south of the observer only once in 24 hours. Anyway, let's now try to see how do we solve these type of questions. Now, all circumpolar questions can be solved using a single approach. If you have that approach clear in your mind, you will be able to attempt any question based on circumpolar bodies. Not only circumpolar bodies, later on we will also see the questions based on rational horizon diagram, and this same approach is applicable to those questions also. So what is this approach with which we can solve these questions? The approach is that in all these questions you make a rational horizon diagram. Make a rational horizon diagram, and whatever information is given to you in the question, a true altitude or a bearing, whatever is given to you, try to put all that information in that rational horizon diagram itself. Now, when you put all the information, what was given in the question, in the rational horizon diagram, the diagram itself will give you a lead into solving the question. For circumpolar bodies, you will not even need to use a formula. No formula is required. Only by adding or subtracting, you will be able to find your answer. But in other rational horizon question,
Once you put all the information in the diagram, you will be able to solve it by a spherical trigonometry formula. A PZX triangle is formed and you are able to solve it using either the cosine formula or the Napier's rule. So let us apply this approach in this particular question and see how it works. Let's draw the rational horizon of the observer. Let's mark off the NESW points. And at the center of this diagram, we have the zenith represented by Z exactly in the center of this diagram. So let's try to put the information now what is given to us. The star is bearing 0, 0, 0 with a true altitude of 78 degrees 12 minutes. Now in this diagram, the 0, 0, 0 bearing or north bearing is represented by line NZ. Line NZ represents the north bearing or 0, 0, 0 bearing. So the star has to be somewhere on this line. Now point N being on the horizon is at 0 degree altitude. Point Z being the zenith of the observer is at 90 degree altitude. The altitude which we require is 7812. So from the horizon going 7812, somewhere here is going to be our star. So let's mark off this altitude in green. You can see the green color line on the plot now representing altitude of 7812. And this is where we have the star. So unknown star is bearing 0, 0, 0 and it is at a true altitude of 7812. Beta, up to here is clear? Any doubts up to here? Clear, sir. Clear, sir. Very good, beta. Great. तो सर अगर स्टार बोर सपोज की 320 होता तो ये जो लाइन आपकी ये लेफ्ट में रहती और स्टार उधर ही आता एल्टीट्यूड. That's right, beta. We would draw the 320 bearing or azimuth line और फिर उस पे स्टार बनाते हैं. Okay. Now after about 12 hours, the same star bore 180 true. Now 180 bearing is represented by line ZS. And on this line, we have to mark a true altitude of 1854. S is the horizon, 0 degree altitude. Z is the zenith, 90 degree altitude. So from the horizon, we move 18 degrees 54 minutes up. From the horizon, we move 18 degrees 54 minutes up. And this is where our star is. So let's mark off the star here. You can name this location as Y. The initial location where the star was bearing north is named as X, and at southerly bearing the star is named as Y. So you have all the information what was given in the question in the diagram now. Now these X and Y indicate the location of the same star. Now, if the star is at X location at one point of time, and after about 12 hours, it is at Y location, that means the declination circle of the star has to be such that it passes from both X and Y. The declination circle should be such that it passes from both these points X and Y. Now, there is only one possibility of how the declination circle is going to be, and that possibility is the declination circle passing from both the locations in this way. There is no other circle which you can draw in this diagram so that point X and point Y lie on that same circle. So this is the only possibility of the declination circle of the star. So you see, once we have position X and Y known to us, we can easily make the declination circle of the star.
Beta, up to here is clear. Any doubts coming in? Clear, sir. Yes, sir. Clear, sir. Very good, beta. Great. So this is the approach. Now, from the declination circle, now we can also identify the pole. We are aware that all the declination circles are centered at the pole. Now we have the declination circle of this particular star. So that tells us that at the center of this circle will be the pole. So let us draw the pole. It will be at the center of this particular circle. The center is going to be here. So let's mark the center of this circle. This is where the center is, and let's mark this as point P. So we have the pole in our diagram now as the center of the circle, and we can also mark off the direction in which the star is moving in this circle. These green arrows, they represent the direction in which the star will be moving. All the celestial bodies, they rise on the eastern horizon. They go up to the meridian of the observer and they set on the western horizon. So this is the direction in which the bodies appear to move. So we have the center at the pole, center of the declination circle. Now moving further, you see the distance n to x is 78 degree 12 minutes. Go ahead, beta. Sir, didn't understand the direction of the body, sir. You mean to say the direction in which the circle is made, the arrows, right? Right, sir, arrows. ओके बेटा, ओके। अगर आपको ये डायरेक्शन समझने में डाउट हो रहा है तो आप इस डायग्राम में ना अपना मेरिडियन आइडेंटिफाई करो। Our meridian or observer's meridian is PZN. Correct, beta? Right? Right, sir. Meridian will always pass from the zenith. And P to S is the inferior meridian. Correct? Correct, sir. Correct. अब बेटा हमारे मेरिडियन को जब भी कोई सेलेस्टियल बॉडी क्रॉस करेगी इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमारे मेरिडियन को जब भी कोई बॉडी क्रॉस करेगी वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट ही जाएगी। इट विल गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दैट इज व्हाई दिस डायरेक्शन। Understood, sir. Understood. Thank you, sir. You can apply it to the south pole, you can apply it to the north pole. Everywhere it will give you the correct direction. Understood, sir. ओके और अगर इसके बावजूद भी कभी कंफ्यूजन आ जाए तो फिर रट्टा मार सकते हो बेटा। जब भी कभी साउथ पोल आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होगी और जब भी कभी नॉर्थ पोल आएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ये रट्टा मारा जा सकता है, बट अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर जरूरत नहीं है रट्टा मारने की। ओके बेटा, ठीक है, चलें आगे। Yes, sir. ओके, ऑल राइट। And the distance S to Y is 1854 minutes. Now we know that from S to Z is 90 degrees and from Z to N is also 90 degrees. So total distance from N to S is 180. The diameter of this diagram, the rational horizon diagram, is 180. If N to S is 180, we know NX 7812 and we know SY 1854. Then in that case, we can easily find out this particular distance, that is from X to Y. It will be 180 minus 1854 minus 7812. So XY in this case comes to 82 degrees and 54 minutes. So XY is 82 degrees and 54 minutes. Now this XY is the diameter of the declination circle. If you divide it by 2, you will get the radius of this declination circle. So 8254 divided by 2 gives you 4127. So this 4127 is the radius of this circle, which is equal to Px or Py.
So polar distance of the star P to X is the radius of this declination circle. Once the pole is there in the diagram, we can also mark off the equinoctial. The point Q of the equinoctial is 90 degrees away from the pole. So we have the pole here. 90 degree away from the pole is this point Q on the equinoctial. And we know equinoctial always passes from east and west points. So joining W, Q and E, we can mark off the equinoctial in our diagram. Now we know the polar distance Px, we have calculated it as half the diameter. It is 4127. From this, we can now find out the declination of the star, which is basically how far away from the equinoctial this star is. That is Q to X. And this declination is equal to 90 minus polar distance. You can see P to Q is 90. P to X is 4127, that is the polar distance. So Q to X will be 90 minus 4127, that is 48 degree 33 minutes. So Qx, which is the declination of the star, is equal to 48:33 minutes. And we can see in the diagram that the star is south of the equinoctial. So the declination is south. 48:33 south. सर Go ahead, beta. सर इक्वेशन हमने बनाया है जस्ट बिकॉज पोल उसके अपोजिट हेमिस्फीयर में, इसलिए हमने उसको ऊपर लिया. That's correct, beta. The Q point will always be 90 degrees away from the pole. तो आप पोल से 90 डिग्री अवे जब जाओगे, if you go towards the south side, you are going outside the rational horizon. Yes, sir. If you go towards the north side, you are getting it within the rational horizon. So that is where we make the Q point. Yes. And the distance between P to Q is 90 degrees, which is same as the radius of this rational horizon diagram. So you can match P to Q is equal to the radius, which is 90 degrees. Any more doubts coming in, beta, up to here? Very good, beta. Great. Let's move ahead. So this was one of the items which was required. The star's declination has been obtained as 48:33 south. Let's move ahead now. We have the declination. The next thing which we need to find is the latitude of the observer. Now finding the latitude is easy. In this particular diagram, the latitude is represented by ZQ. Z is the zenith, Q is the equinoctial. So ZQ represents the latitude of the observer. And this is equal to PS or SP. SP or PS is the elevation of the pole or the altitude of the pole. And we are aware that the elevation of the pole is always equal to the latitude of the observer. So if we find out the value of PS, it will give us the latitude. Now PS is easy to find. PS is basically equal to SY plus PY. SY is given as 1854, that is the altitude of the star. So we know SY is 1854 and PY is nothing but the polar distance of the star, which we had already found out. So SY 1854 and PY is the polar distance which we already found was 4127. So when you add these two, SY plus PY gives you the elevation of the pole equal to the latitude of the observer, and it comes to 60 degrees 21 minute south. So both the required items have been obtained. The declination of the star is found and the latitude of the observer is also obtained.
So any doubts in this now, beta? Anywhere? Sir, it is in the South Pole. That's right, beta. Whenever in this diagram you have the pole south of the Z point, it will always be the South Pole. Sir, and declination, sir. Declination is also south, beta, because you see the star is south of the equinoctial. Equinoctial is WQE. Okay. Okay, and you can also check it from the circumpolar criteria. If this body is circumpolar, lat and dec have to be the same name. So if latitude is south, declination also is south. Yes, sir. Yes, sir. Thanks, sir. Okay, बेटा, great. समझ गए बेटा? Sir. Very good. अब बेटा Sir, ये एक कॉन्सेप्ट, हाँ बोलो बेटा बोलो. सर ये आप बोले ना सर जिसको रट्टा मारने के लिए वो तब रट्टा मारना है अगर समझ में ना आए तो बेटा. दैट इज ए emergency weapon which I have given you. अच्छा ओके. नहीं सर, बट नॉर्थ पोल में भी अगर होगा सर तो देन वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा ना सर. क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है सर? बेटा एंटी क्लॉकवाइज ही तो घूम रहा है इसमें भी. नहीं इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है सर. नॉर्थ अगर नॉर्थ पोल यूज कर रहे हैं सर हम लोग. ओके, नॉर्थ में क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, राइट? यस सर. कोई बात नहीं बेटा, अगला क्वेश्चन में नॉर्थ में ले जाएंगे, नॉर्थ में घुमा देते हैं क्लॉकवाइज. ओके. ओके ग्रेट. सो अगर आप बेटा इस क्वेश्चन को समझ गए हो तो यू हैव गॉट देन आइडिया ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट दीज रैशनल हॉराइजन क्वेश्चंस. दिस इज द मास्टर की हाउ द क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड. सो वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, अब रैशनल हॉराइजन का कोई भी सवाल आ जाए, using the same approach, the same methodology, it can be easily solved. Okay, great. So अब बेटा can we continue further और एक ब्रेक लेनी है? हाँ सर, एक ब्रेक तो बनता है. सर एक ब्रेक ले लेते हैं. Okay, सर इस all right. क्वेश्चन में इफ जो फर्स्ट एल्टीट्यूड एंड सेकंड एल्टीट्यूड दिया है सर, इफ जस्ट द अजीमुथ वुड बी रिवर्स्ड. In the first case, if it would be 180 and in the second case it would be 000, then the whole things would be reversed, right sir? That's right बेटा. फिर ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, सर्कल ऊपर चला जाएगा. So you will have the north pole coming in. Right sir. PZ same point हो सकते हैं. Ask again. Pole and zenith same. हाँ, पोल उस केस में ऊपर चला जाएगा बेटा. So Z is going to remain at the same. Z तो हमेशा सेंटर में ही रहता है रैशनल हॉराइजन के. कोई भी ऑब्जर्वर ट्रू ऑल्टीट्यूड दोनों को ऊपर के सेम हो, एक ट्रू ऑल्टीट्यूड मतलब बिफोर 12 आवर्स एंड आफ्टर 12 आवर्स, सो उसमें कैसे डायग्राम बनेगा? मतलब एकदम सेंटर में हो जाएगा T and Z. यू मीन टू से कि जो एल्टीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है, 40 डिग्री एल्टीट्यूड नॉर्थ में, 40 डिग्री साउथ में. यस सर. ओके, अब ये बहुत आसान है बेटा. अगर ऐसा हो जाए तो आपका जो डेक्लिनेशन सर्कल है ना, इट विल बी सेंटर्ड एट द जेनिथ. यस सर, वही जेनिथ पे बनेगा वो. तो पोल भी वहीं पे आ जाएगा. नाउ व्हेन द पोल इज इक्वल टू द जेनिथ, दैट मींस यू आर एट द पोल. यस सर. ओके, सो यू आर एट दैट पोल बेटा. ओके. इसका असाइनमेंट हाँ बेटा, इसका असाइनमेंट भी आपको मिलेगा, पर आज नहीं मिलेगा, क्योंकि असाइनमेंट के पहले मुझे आपको ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करवाने हैं. ये तो पहला कॉन्सेप्ट है. इसके बाद मुझे ट्वाइलाइट का कॉन्सेप्ट आपको करवाना है कि उसके न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करते हैं. अभी हमने सिर्फ थ्योरी सीखी है, सो विल अंडरस्टैंड. और फिर मैं आपको 2-3 सवाल जो है वो हाथ पकड़ के कराऊंगा, एंड देन उसके बाद मे बी नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपको इसका असाइनमेंट मिलेगा. विच सॉल्यूशन है सर? ये तो स्टार आइडेंटिफिकेशन भी मतलब आएगा इसमें? You can use this method for star identification also. Okay, so आप star identification के लिए same technique use कर सकते हो, star identify भी हो जाएंगे. Okay, star identification में ना कुछ tricky question आते हैं, tricky questions. मैं करा दूंगा बेटा आपको. I'll do a couple of questions based on star identification.
सर अभी Okay, आपने बोला ना कि पोल होगा, तो सर उस पे फिर हम उसमें क्या रखेंगे? इट कैन बी इधर नॉर्थ और साउथ बोथ। फिर बेटा उसमें कोई ना कोई इंडिकेशन दी होगी आपको। ओके, सम इंडिकेशन हैज टू बी गिवन, वेदर इट इज द नॉर्थ पोल और इट इज द साउथ पोल, कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर होगी। ठीक। Okay, all right. So let's take a break, beta. We meet after 10 minutes. Yes. सर समझ क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है? ओके ओके ओके, अंडरस्टूड सर। Okay, great.